जय जगन्नाथ वेलकम करुच्ची आपण मानको हमर ए क्वेश्चन आंसर सीरीज रो आउ एक सेशन को तो आज आपण मानको पई किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि चलंतो स्टार्ट करिबा आज रो सेशन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स वुड यू यूज एन ओरल थर्मोमीटर को पेशेंट रा में ओरल थर्मोमीटर यूज करिबा 6 month old infant patient receiving oxygen therapy, unconscious patient, 42-year-old healthy woman. आंसर करंतु समस्ते को पेशेंट रो हमें ओरल थर्मोमीटर यूज करिबा ना 42-year-old healthy woman. ऑप्शन डी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा when a fire occurs in a patient's room the nurse's priority should be जेतेबेले गोटे पेशेंट रूम रे फायर हेची नर्स रो प्रायोरिटी सेठी कोन रहिबो एक्सटिंग्विश द फायर साउंड द अलार्म रन फॉर हेल्प रेस्क्यू द पेशेंट आंसर करंतु समस्ते तो जेतेबेले फायर होची सेतेबेले हमें हमरो फर्स्ट प्रायोरिटी कोन रहइबो ना रेस्क्यू द पेशेंट फायर रे दीटा जिंस रहउची गोटे हला रेस आ गोटे हला पास रेस रे कोन रहउची ना रेस्क्यू ए रे अलार्म सी रे कंटेन एंड ई रे इवैक्यूएट पास रे कोन रहउची पास रे हला फर्स्ट हला पुल then hela aim then squeeze then hela sweep तो फायर रे हमरो फर्स्ट प्रायोरिटी रहइबो रेस्क्यू द पेशेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन ए हॉस्पिटल सेटिंग रे मोस्ट इफेक्टिव मेथड कोउटा रहइबो जोटा कि हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करि परिबा यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैंड हाइजीन वेयरिंग ग्लव्स स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट हॉस्पिटल सेटिंग रे हमरो मोस्ट इफेक्टिव मेथड कोउटा रहइबो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करिया पई ना हैंड हाइजीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Skin turgor may be assessed by which of the following techniques? Skin turgor हमें केमती assess करिबा lightly pinching a skin fold, identifying with the fingertips, touching to detect moisture, using special lightning. तमे पेशेंट रो स्किन टर्गर केमती असेस करिबा ना लाइटली पिंचिंग ए स्किन फोल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन इज कन्वर्टेड फास्ट इनटू ओव्यूलेशन परे जो ग्राफियन फॉलिकल रहउची सेटा कोउटा को कन्वर्ट होबो कॉर्पस अल्बिकान्स कॉर्पस लुटियम कॉर्पस स्ट्रेटम कॉर्पस ट्रापेजॉइडम आंसर करंतु समस्ते ओव्यूलेशन परे हमरो ग्राफियन फॉलिकल कोटा को कन्वर्ट होची ना कॉर्पस लुटियम ऑप्शन बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डार्क bands of skeletal muscle are composed of these filaments actin myosin sarcomere troponin तो ये डार्क बैंड देछि डार्क बैंड कौन होबो ना मायोसिन जोटा को कि डार्क बैंड आल्सो नोन एज ए बैंड एक्टिन कौन रहउची ना लाइट बैंड और आई बैंड sarcomere कौन ना बेसिक
structural unit of muscle fiber। ट्रोपोनिन कौन रोचे ना ए रेगुलेटरी प्रोटीन complex attached to actin filaments। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ल्यूकोसाइट हैविंग लार्जेस्ट डायमीटर को ल्यूकोसाइट रो डायमीटर टा बेसी रहउची न्यूट्रोफिल मोनोसाइट इओसिनोफिल बेसोफिल। न्यूट्रोफिल रो हमरो डायमीटर केते रहउची ना 10 टू 12 माइक्रोमीटर। इओसिनोफिल रो केते रहउची ना 10 टू 14 माइक्रोमीटर। बेसोफिल रो भी केते रहउची ना 10 टू 14 माइक्रोमीटर। तमर एठी लार्जेस्ट डायमीटर पचारची कोन हबो ना मोनोसाइट सेटर केते रहउची ना 12 टू 20 माइक्रोमीटर। एना हमरो लास्ट रेला लिम्फोसाइट रो केते रहउची लिम्फोसाइट रो डायमीटर रहउची 6 टू 15 माइक्रोमीटर जोटा कि स्मॉलेस्ट। सिंगल बोन ऑफ स्कल स्कल रो सिंगल बोन कोटा पेराइटल टेम्पोरल फ्रंटल स्पिनॉइड। तो सिंगल बोन कौन रहिबो ना फ्रंटल। मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट ओस्टियोक्लास्ट। मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल कौन रहिबो ना ओस्टियोसाइट। laryngeal prominence or Adam's apple is part of this laryngeal cartilage। cricoid thyroid retinoid epiglottis। कौन हबो राइट आंसर ना ऑप्शन बी thyroid। Approximately 87.5% of water and sodium is reabsorbed by this part of nephron। nephron रो को पार्ट रे 87.5% water and sodium reabsorbed होउचे। glomerulus PCT DCT collecting tubule। DCT कौन रोचे ना distal convoluted tubule। PCT कौन रोचे ना proximal convoluted tubule। तमरो मैक्सिमम सोडियम एंड वाटर कोठी रिएब्जॉर्ब होची ना proximal convoluted tubule रे। एंड DCT रे केते होची ना DCT रे 5 टू 10% वाटर एंड सोडियम रिएब्जॉर्प्शन होचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा digestion of proteins carbohydrates and fat is completed in प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रो डाइजेशन को पार्ट रे होचे इसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन। आंसर करन तो समझते हैं
तो हमर कोन हैला ना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कोटे डाइजेशन होची ना स्मॉल इंटेस्टाइन रे ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आरएनए वायरस कोटा आरएनए वायरस नुह रेट्रोवायरस रैप्डोवायरस एंटेरोवायरस एडिनोवायरस तो कोटा एटी आरएनए वायरस नुह पचारिछि ना एडिनोवायरस एडिनोवायरस होची डीएनए वायरस रेट्रोवायरस कौन कज करुछि ना एचआईवी रैप्डोवायरस कौन करुछि रैबिज एंटेरोवायरस कौन करुछि ना पोलियो वायरस। Plague is transmitted by sandflies, mites, red flies, ticks. प्लेग कहा द्वारा ट्रांसमिट होची ना रेड फ्लाइज सैंड फ्लाइज द्वारा कौन ट्रांसमिट होची ना लेशमेनियासिस जहाँ को के कौन कहूँ आमे काला अजर माइट्स द्वारा कौन होची ना स्क्रब टाइफस टिक्स द्वारा कौन होची ना लाइम डिजीज। पुटिंग ऑन सीक्वेंस ऑफ पीपीई पीपीई जेतेबेले आमे पिंदुचु तार सीक्वेंस कौन रहिबो आंसर करंतु समस्ते पीपीई रो जेतेबेले डनिंग आमे जेतेबेले पिंदुचु तार सीक्वेंस कौन रहिबो ना गाउन देन मास्क देन गॉगल लास्ट रे कौन रहिबो ना ग्लोव्स जेतेबेले पीपी आमे डफिंग करूचु डफिंग रो सीक्वेंस कौन रहिबो ना फर्स्ट आमे रिमूव करिबा ग्लोव्स देन रिमूव करिबा गॉगल्स देन रिमूव करिबा गाउन लास्ट रिमूव करिबा मास्क देन लास्ट रे कौन रहिबा हमरो ना हैंड वाशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डैश इज ए डिसऑर्डर characterized by proteinuria hypoalbuminemia hyperlipidemia and edema कौन है ना को डिसऑर्डर रे हमरो पेशेंट रो प्रोटीन्यूरिया देखा जाउची हाइपोअल्बुमिनेमिया होची हाइपरलिपिडेमिया एंड एडिमा होची पॉलीसिस्टिक किडनीज एपिस्पेडियासिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आंसर करंतु समझते को डिजीज रे हमरो देखा जाउची ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम। Which one of the following vitamins aids in wound healing को विटामिन हमरो हेल्प करूची wound healing रे विटामिन बी विटामिन डी विटामिन सी विटामिन ए wound healing रे हमरो को विटामिन हेल्प करूची ना विटामिन सी। Kangaroo mother care is a way of protecting the baby from hyperthermia hypothermia hyperglycemia hypocalcemia जेतेबेले हमें बेबी को केएमसी दउचे सेतेबेले कोउथिरु ताको प्रोटेक्ट करिबो बेबी को ना हाइपोथर्मिया। The greatest danger of breech presentation is prolapse of cord prolapse of arm prolapse of foot precipitate labor आंसर करंतु समझते।
द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन कौन हम ना प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द स्केल यूज्ड टू मेजर द जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न रो जेस्टेशनल एज मेजर करिया पई को स्केल यूज होउची। बालार्ड स्केल, मर्क्यूरी स्केल, फ्लैक्स स्केल, अपकर स्केल। आंसर करंतु समझते। न्यूबॉर्न रो जेस्टेशनल एज को मेजर करिया पई हमरो को स्केल यूज होउची ना बालार्ड स्केल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा where is the adrenal gland situated in the human body। ह्यूमन बॉडी रो एड्रेनल ग्लैंड कोठी थाए। बिलो द गॉल ब्लैडर, एट द नेक, टॉप ऑफ ईच किडनी, लेटरल साइड ऑफ द लिवर। ह्यूमन बॉडी रो एड्रेनल ग्लैंड कोठी थाए ना टॉप ऑफ ईच किडनी। This prevents the absorption of poison from the gastrointestinal tract। डाइसल्फिराम, प्रालिडोक्सामाइड, एक्टिवेटेड चारकोल, इंजेक्शन आट्रोपिन। पॉइजन रो एब्जॉर्प्शन पाई पॉइजन रो एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करिया पाई हम पेशेंट को कोन दउ ना एक्टिवेटेड चारकोल। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लो कैलोरी डाइट्स आर डिजाइन्ड फॉर द पेशेंट्स डायग्नोस्ड विथ। को पेशेंट को लो कैलोरी डाइट एडवाइस करिबा। ब्रोंकियल आस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर, स्ट्रोक। को पेशेंट को हमें लो कैलोरी डाइट दबा ना डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पेशेंट हैज द फॉलोइंग आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट्स pH 7.52, PaCO2 30 mmHg, HCO3 24 milliequivalent per liter। The nurse determines that these results indicate metabolic alkalosis, respiratory acidosis, metabolic acidosis, respiratory alkalosis। आंसर करंतु समझते। हमरो नॉर्मल पीएच केते रहउची नॉर्मल पीएच रहउची 7.35 टू 7.45। एवरेज हम केते धरचू 7.4। 7.4 रु अधिका हेले हमें ताकू अल्कालोसिस एंड 7.4 रु कम हेले कोन होबो ना एसिडोसिस। तो एठी हमरो 7.52 देछि ताले एटा कोन आसीबो हमरो ना अल्कालोसिस। एंड हमें PaCO2 देखिबा PaCO2 केते देछि एठी 30। हमरो नॉर्मल PaCO2 केते रहउची ना 35 टू 45 mmHg। एठी कम देछि हमरो CO2 ताले एटा कोन होबो ना रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट पैरामीटर देखिबा HCO3 केते देछि हमरो 24 मिलीइक्विवेलेंट। हमरो नॉर्मल केते रहउची ना 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तमरो आंसर कोन आसिला ना रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ऑप्शन डी राइट आंसर। The hemorrhagic phenomena in dengue is determined by neutralization test, plasma leakage, tourniquet test, epigastric discomfort। कौन है ना डेंगू हेमोरेजिक फेनोमेना रे आमे केमती ताको डिटरमाइन करिबा ना टूर्निकेट टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट रे कौन होची ना टू मेजर neutralizing antibodies
प्लाज्मा लीकेज टा कौन ना कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिवियर डेंगू जेतेबेले हमर होची कौन होची पेशेंट ना प्लाज्मा लीकेज होची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल complement diuretic therapy for patients with congestive heart failure? Low potassium diet, low sodium diet, increased fluid intake, increased intake of iron rich। कौन हम ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रो डायरेटिक थेरापी रे कौन रहइबो ना लो सोडियम डाइट दबा हमें पेशेंट को। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ chronic congenital aganglionic megacolon? कौन है ना chronic congenital aganglionic megacolon रो अदर नेम कौन? Hirschsprung's disease, pyloric stenosis, into susception, celiac disease। कौन हम ना congenital aganglionic megacolon रो another name कौन आसीबो ना Hirschsprung's disease। pyloric stenosis रे कौन होची ना ए narrowing of the opening from the stomach to the first part of small intestine। कौन होची ना एठी ओपनिंग जो रहूची स्टमक रो स्मॉल इंटेस्टाइन रे जो ओपनिंग टा रहूची सेटा होची नेरो हे जिवो। एठी कौन देखा जाए ना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। इनटू ससेप्शन ले कौन होची ना टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सीलियाक डिजीज कौन होची ना सीलियाक डिजीज होची हमरो ऑटो इम्यून रिएक्शन टू ग्लूटेन डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर affects the perineal muscles? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो आम ये देखा कौन ना ग्रेडिंग ऑफ पेरिनियल टियर। कौन कौन रोची फर्स्ट है ग्रेड फास्ट। रे कौन होची ना पेरिनियल स्किन इन्वॉल्व होची। ग्रेड सेकेंड रे कौन होची ना पेरिनियल मसल इन्वॉल्व होची। देन देखिबा कौन ना ग्रेड थर्ड रे कौन होची ना एनल स्पिंक्चर इन्वॉल्व होची। एथरे पुनी तीनटा रहूची गुटे हला थर्ड ए, थर्ड बी एंड थर्ड सी। थर्ड ए रे कौन रहूची ना लेस देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पिंक्चर इन्वॉल्व होची। एंड ग्रेड थर्ड बी रे कौन होची ना मोर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पिंक्चर इन्वॉल्व होची। एंड थर्ड सी रे कौन होबो ना बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्पिंक्चर इन्वॉल्व होबो। एंड लास्ट रे देखिबा कौन ना ग्रेड 4 रे कौन होची ना रेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व होची। रेक्टल म्यूकोसा। तो ये हमर क्वेश्चन रे कौन पचारिथिला ना
पेरिनियल मसल को ग्रेड रे होची ना सेकेंड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी रो थर्ड स्टेज कोटा रहउची डिप्रेशन, प्रोटेस्ट, डिटैचमेंट, डिस्पेयर। सेपरेशन एंजाइटी रो तीनटा स्टेज रहउची जोटा कि फास्ट रे रहउची कोन ना प्रोटेस्ट, सेकंड रे रहउची डिस्पेयर, थर्ड रे रहउची डिटैचमेंट और डेनियल। तो हमरो थर्ड स्टेज पचारिची कोन हबो ना ऑप्शन सी डिटैचमेंट। The risk of developing neural tube defects in the fetus can be reduced by the mother intake of fetus रो neural tube defect को reduce करिवा पई मदर को कौन इंटेक करिवा दरकार आयरन, जिंक, कैल्शियम, फोलेट। कौन ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पई कौन इम्पोर्टेंट ना फोलेट इंटेक। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ड्रग मॉर्फिन एनिमल्स, ह्यूमन, मिनरल्स, प्लांट्स। मॉर्फिन हमरो कोठो आसुची तार सोर्स कोन रहउची ना प्लांट्स रे। The Montauk's test is used to detect a person with TB, bacillus, syphilis, gonorrhea, HIV। Montauk test कोउटा डिटेक्ट करिया पई ना टीबी, बेसिलस। Montauk test रे कोन होची ना प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्ट होची जोटा कि इंट्राडर्मल रे दिया होची फोर आर्म रे तार डोज केते रहउची 0.1 ml एंड तार रिजल्ट केते भितरे आसीबो ना 48 to 72 आवर्स भितरे रिजल्ट आसीबो एंड तार जदी मोर देन 10 mm हैला ताहले सेटा को हमें पॉजिटिव बोली कंसीडर करिबा एंड मोर देन 5 or equal to 5 को पेशेंट रे ना जदी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थिबो। सिफिलिस पई हमें कोन टेस्ट करूछु ना VDRL। गोनोरिया पई कोन ना नेट टेस्ट एंड HIV पई कोन होची एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स कनेक्ट्स लेग एंड फुट। लेग एंड फुट को को बोन कनेक्ट करूची टैलस, नेविकुलर, कैल्केनियम, क्यूबॉइड। तो हमरो कोन हैला ना लेग आउ फुट को को बोन कनेक्ट करूची ना टैलस। Which of the following levels of body mass index is considered to be overweight? 30 to 34.9, 25 to 29.9, 18.5 to 24.9, less than 18.5। आंसर करंतु समझते हमरो BMI केमती कैलकुलेट करा होची ना weight in kg divided by height in meter square। हमरो नॉर्मल केते रहउची BMI नॉर्मल BMI 18.5 to 24.9 जोटा कि ऑप्शन सी रे जोटा देइचे सेटा हमरो कोन ना नॉर्मल। लेस देन 18.5 कोन होबो ना अंडर वेट। तो एडी हमरो ओवरवेट रे केते आसीबो ना
35 to 29.9 30 ରୁ 34.9 এটা কোন আসিবো না ক্লাস 1 obesity क्लास सेकेंड रे केते आसीबो ना 35 टू 39.9 हमर आसीबो कोन ना क्लास सेकेंड ऑफ ओबेसिटी एंड मोर देन 40 और इक्वल टू 40 हेले एटा आसीबो क्लास थर्ड ओबेसिटी an absence of spermatozoa is termed as oligospermia asthenospermia azoospermia teratospermia absence of spermatozoa को कौन कहा जाउची ना एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया का कहा जाउची ना लो स्पर्म काउंट एस्थेनोजोस्पर्मिया कोन ना रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी टेराटोजोस्पर्मिया कोन ना एब्नॉर्मल स्पर्म morphology or unusual shape. The oxygen cylinder color code in India is oxygen cylinder color केमती रहिबो black body and white shoulder black green body and white shoulder light blue ऑक्सीजन सिलिंडर कलर केमती रहइबो ना ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट शोल्डर एफएमआरआई स्टैंड्स फॉर फास्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फंडामेंटल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फ्रैक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आंसर करंतु समझते एफएमआरआई का कहउछ हमें ना फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कुसामुल ब्रीदिंग is a deep and labored breathing pattern often associated with diabetic ketoacidosis hepatitis hepatomegaly acute renal failure कोन हला ना एठी देइछि हमरो कुसामुल ब्रीदिंग को केस रे देखा जाउछि ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रे आरबीएसके फुल फॉर्म आंसर करंतु समझते आरबीएसके रो फुल फॉर्म कोन ना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एटा लॉन्च केबे हेतिला 2013 रे टारगेट ग्रुप को माने ना 0 to 18 इयर्स एटा कोन करछि ना 4D कवर करछि डिफेक्ट एट बर्थ deficiency disease any disease and last asibo developmental delays or any disability the natural pacemaker of the heart रो नेचुरल पेसमेकर का कुआ जाउची एवी नोड एसए नोड पुरकिंजी फाइबर बंडल ऑफ ह्यूज नेचुरल पेसमेकर का कुआ जाउची ना एसए नोड साइनो आर्टेरियल नोड short shuffling gait is characteristically seen in Alzheimer's disease Parkinson disease multiple sclerosis myasthenia gravis short shuffling gait को केस रे देखा जाउची ना पार्किंसन डिजीज रे थैंक यू